दी इंडस्ट्री इसकी एकदम सही कहा किसी ने कि मुझे भी ठीक से पता नहीं था कि इंडस्ट्री है क्या। 2 साल पहले तक जब मुझे 2 साल हो गए इस बात में। आपकी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, if I can use the word problem, is your perception and the understanding in the rest of the world कि आप हो क्या। आपने इस पे you have not worked for it seriously। देखो हर पॉलिटिक्स तो है, पॉलिटिक्स is all about perception management. Politics is all about perception. But even within this increasing age of social media and networking, even your professional life is a lot about perception. जैसे justice पे कहते हैं, justice should not only be done, justice should also seem to have been done. तो लगना चाहिए कि न्याय होता है, न्याय तो करिए, पर इसको जताइए भी कि न्याय होता है। आपकी इंडस्ट्री की समस्या ये है कि आप जो कर रहे हैं, and the figures that were told before I came to the stage are astounding. 50,000 crores, 100,000 crores. मेरे से जब ये लड़ाई करने आते थे पहले, I just joined, लेकिन मेरे बैठे थे। So he would give that number of GST, some 1,000 crores of GST, so many women employed. इस चीज को आपने कभी ठीक से पिच नहीं किया, करना चाहिए। I'll give you a parallel example. Online gaming और online gambling एकदम अलग अलग चीजें हैं। Game of chance versus game of skill. One is game of skill, जिसको सरकार बढ़ावा दे रही है। Game of chance is betting, जिसको सरकार रोकना चाहती है। पर आज के परिप्रेक्ष्य में, in today's context, जो दोनों मिक्स हो गए, हमारे फ्रेटर्निटी में भी, गवर्नमेंट में भी, दोनों को एक ही नजर से देखा जा रहा है। इसलिए जो इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की चीज है, जिसमें इंडिया कुड बिकम अ वर्ल्ड लीडर इन ऑनलाइन गेमिंग बिकॉज ऑफ आवर प्रोग्रेस, आवर टैलेंट इन सॉफ्टवेयर आईटी, वो थोड़ा सा हिल गया है बिकॉज उसको गैम्बलिंग की तरह देखा जा रहा है। मैं खंडेलवाल जी से 200% सहमत हूँ जो उन्होंने कहा कि ब्रिक एंड मॉर्टर जो रिटेल ट्रेड है और आपका जो रिटेल ट्रेड है, दिस इज टोटली सिमिलर। देयर आर लेयर्स, देयर आर प्रोडक्ट्स दैट हैव्स टू बी सोल्ड थ्रू द नेटवर्क ऑफ होलसेलर, रिटेलर। पीपल हैव टू हैव एक्सेस टू दोज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग मिसलीडिंग ना हो, प्रोडक्ट की पैकेजिंग मिसलीडिंग ना हो, वो तो दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हैं। अभी सुबह मैं उड़ीसा भुवनेश्वर में वीसी से कनेक्टेड था। हमारे उड़ीसा के जितने कंज्यूमर कमीशन के जजेस हैं, उनकी ट्रेनिंग को मैं एड्रेस कर रहा था। उनको यही समझा रहा था मैं कि आप चाहे ऑनलाइन सेल हो या ऑफलाइन हो, आपके इश्यूज वही हैं। इशू इज मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, इशू इज अश्योरेंस अबाउट राइट क्वालिटी, assurance about right quantity, and consumer should not be cheated. So उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन में फर्क नहीं है। आपकी इंडस्ट्री में भी वही है। There is a sale which is taking place, and that has to be as per the provisions of the act. So there is a parallel, but there is still the issue of perception. मेरी खुद की टीम में इश्यूज हैं परसेप्शन। आपकी जो व्यवस्था है गुड्स को सेल करने की, उसको पॉन्जी स्कीम, जिसको इन्होंने पिरामिड स्कीम से जो किया जा रहा है, देयर हैज टू बी अ क्लियर डिस्टिंक्शन एंड नोबडी विल वर्क फॉर इट। यू हैव टू वर्क फॉर इट। यू हैव टू मेक अ केस कि साहब ये दो अलग अलग चीजें हैं, एंड दिस इज राइट एंड दिस मे नॉट बी राइट। एंड अनलेस यू ब्रिंग क्लैरिटी, आपके साथी, इन सबकी मैं शिकायत कर रहा हूँ आपको, ये जो सामने बड़े साथ लोग बैठे हैं, ये जब आते हैं मेरे पास बहुत लड़ाई करते हैं। मैं बता दूं, अभी तो मेरे को बुलाया इसलिए तो बोलूँ नहीं, जाके मेरे कमरे में मेरे से बहस करते हैं, नाराज हो जाते हैं, लड़ाई करते हैं कि साहब आप हमें क्यों ऐसे ट्रीट कर रहे हो। फिर सॉल्यूशन क्या देते हैं, ये सुनिए।
सोल्यूशन की साहब आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंगापुर की तरह 50% कमीशन कैप कर दो, ये कर दो, वो कर दो. So my personal view and the government view is we are not interested in your business model. We don't want to interfere in anybody's business model. And I will go back to Mr. Khandelwal's statement. As long as you are not cheating the consumer, as long as you are not mis-selling, as long as you are not mis-advertising, as long as you are not indulging in unfair trading practices, मेरे को अपने बिजनेस मॉडल में इंटरफेयर मत करवाओ. फिर क्या होगा, जैसे ही हम तो बना देंगे इसके प्रेशर में, एनर्जी के प्रेशर में 50% कमीशन कैप कर दो. सॉरी जस्ट टेकिंग अ नेम, ये कोई और नहीं. बट फिर कोई हमारा इंस्पेक्टर चेक करने लगेगा, आप क्या करेगा, बोलेगा दिखाओ अपना 50% है, पता लगा वो 50.03% है, फिर वो बोलेगा नहीं इस पे तो कार्रवाई होगी, एक्शन होगा. 49 भी होगा, फिर भी बोलेगा नहीं आपका 50 कर रहा है. Why do you want all that? Do you want government in your backyard? No. Yes sir. मेरे को क्यों बुलाया? So we don't want to be in your backyard. We have other better things to do. We want you, as long as you are indulging in a business which is reasonable. I'm not asking you to do charity. आप यहाँ चैरिटी के लिए नहीं हुआ, समाज सेवा के लिए नहीं हुआ. आपको बिजनेस करना है, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू मेक प्रॉफिट्स. सबका घर कैसे चलेगा, प्रॉफिट तो आना ही पड़ेगा. लेकिन प्रॉफिट सही तरीके से जब तक कमाया जा रहा है, और जैसा लग रहा है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस रूम वो सही तरीके से ही कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जो परसेप्शन है, जो बाकी लोग समझ रहे हैं कि नहीं इसमें तो कुछ चोरी हो रही है, और वो जैसे वो 50 रुपए मीटिंग अटेंड करने वाला जो इशू था, दैट कैन बी ट्रिकी. You know, it has to be done. It has to be structured in a manner that it appears fair. So the problem with your industry is only perception. वो मुझे अब समझ में आ गया. और जैसे डेफिनेशन के इशू, अब ये आप आए थे, आप मुझे याद नहीं कौन आया था. And we changed that definition because we realized any business has to go through that network, whether it is brick and mortar or online or your business direct selling. So layers to होनी पड़ेगी, because one person cannot do everything. So there has to be a producer, a wholesaler, a retailer, and then the consumer. So that is acceptable practice in all of the forms of business. So it has to be acceptable here. But if money circulation is involved, if there are subscriptions which cannot be explained in a normal business practice, obviously we will intervene, because it's the government who has to protect the consumer, the people from being taken for a ride. You cannot take people for a ride unless of course you have Uber and Ola to take people for a ride. But so we have to draw the line there. But if you are on this side of the line, then obviously we will support you. We realize that there is employment, there is GST revenues, both positive for the government. We realize that there is women empowerment. I am pointing here because this table is exclusively for women. So this is the best table in the house. So जैसा खंडेलवाल जी ने कहा, जो प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं उसमें जो कई को आप परिपूर्ण कर रहे हो, यू आर सैटिस्फाइंग टिकिंग मेनी ऑफ दोस बॉक्सेस. विमेन्स एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं नौकरी की तलाश मत करो, ऐसे व्यक्ति बनो जो नौकरी दे सको. सीरियस अबाउट इट. अभी कंज्यूमर राइट्स की बात या तो इसमें हमने पिछली मीटिंग में हो रही थी. I want to tell you a statement which PM gave in August 2023. G20 के पहले B20 हुआ था, जो बिजनेस वर्ल्ड है उसके 20 देशों के लोग आए थे और सबसे प्रधानमंत्री जी एड्रेस कर रहे थे किसी जगह में, भूल गया कौन सी जगह पे. And he said the whole consumer rights paradigm has to shift to consumer care. राइट्स से ऐसा लगता है कोई चीज है जिसको आप
छीन के लेना चाह रहे हो या लड़ के लेना चाह रहे हो। He said अगर आप जैसी कंपनी या नॉर्मल कंपनीज अगर कंज्यूमर केयर के प्रिंसिपल पे काम करें तो ये राइट वाला झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। राइट से ऐसा लगता है कि कोई देयर आर टू एडवर्सरीज, दो लोग हैं जो अलग अलग चीज चाह रहे हैं और वो लड़के हम उनसे छीनना, जिसको बोलते हैं ना जीरो सम गेम, इनसे ले लिया तो हमारे पास आ गया, उनका वो माइनस हो गया। बट व्हेन वी टॉक ऑफ केयर, it's a win-win proposition both for business and for consumers. I'm sure most of you are already attuned to that paradigm. If not, please do, because when you are engaging with the consumer, unless you have this care thing at the back of your mind, the consumer will never be yours. एक बार बेच दिया गलती से, अगली बार थोड़ी बहुत खरीदेगा। उसको पता है you are not caring. बड़ा अच्छा सुना आपने, yes बोला तो सुनके अच्छा लगा। So to sum up again, don't make unrealistic claims. Don't give false information. Be very, very right on the quantity and quality, दोनों aspects, what you are offering. Be honest and take care of the consumer. And the leaders should work on the perception management. कि भाई हम ये नहीं हैं, हम ये हैं. It is when IPL started, cricket थी, तो मैंने सोचा कि साहब क्रिकेट तो बर्बाद हो जाएगा, कहाँ टेस्ट मैच, कहाँ वनडे और ये कहाँ लाल के कपड़े पहन के खेल रहे हैं. They thought that but the way IPL managed its perception, now it's the most watched tournament in the world. So you have to work on management. I'm sure you're doing the right thing. Please work on perception. As long as you are doing the right thing, we are with you. We'll support you. मुझे पिछली किसी बैठक में ले गए थे, वहां भी मैंने यही कहा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो सही रूप से अपना बिजनेस चला रहा है उसका पूरा सपोर्ट करो, क्योंकि हमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम इकोनॉमी चला रहे हैं। देश की इकोनॉमी तो आप चला रहे हैं, हम तो खाली दफ्तर में बैठे जो बात हो रही वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंट्री की, जो 5 ट्रिलियन की बात हो रही है, वो तो आपकी वजह से हो रही है, हमारी वजह से थोड़ी हो रही है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि आप जो अच्छी रूप से अपना व्यवसाय चला रहे हैं उनको पूरा समर्थन दें, और चूंकि उपभोक्ता जो कंज्यूमर है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी हमारा काम है। सो हमारा काम ये भी है कि यू डोंट क्रॉस द लाइन। कई बार होते हैं 5-10%, हमारी सर्विस में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, कुछ लोग खराब होते हैं, सो दे विल ट्राई टेक एडवांटेज। उस समय हमारा रोल आ जाता है कि भाई यू कांट डू दैट, बट एज लॉन्ग एज यू आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर विद यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।